अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू लीडर्स लाउंज। आज हमारे गेस्ट फातिम, ही इज़ द चीफ लीगल ऑफिसर ऑफ इमारत ग्रुप ऑफ कंपनीज. He has worked extensively in the legal domain, in where companies उनको help करना legal drafting में, legal compliance में, and just helping companies to stand up on their ground and seeing कि किस तरह से companies expand कर सकती हैं with the idea कि strong legal standpoint के साथ. So आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि what brought him to this career और अब वो क्या काम कर रहे हैं and how is he making a great impact in our society. Assalamu alaikum Fatim. Hi, Gawadi, how are you? Good, thank you. Thank you so much for coming to the show. My pleasure. And just a small correction, I am general manager legal, not Great. chief legal. Okay, Yes. great. So I think basically you're looking at जो The whole function legal है, function. so in terms चाहे उसे legal कहें या GM, लेकिन core function आपके पास Yeah, है. so I look after, so I work for the Emarat group of companies, which is the biggest real estate company in Pakistan. And I look after the legal function, which has different verticals in it. And then I also have additionally compliance. So that's the code of conduct, ethics, different policies, procedures. And now recently I'm also looking after the client care. Amazing. So that's the after sales services that we give to our clients in terms of agreements and all their complaints and issues. So Fatim, ये जो legal और compliance जब भी लोगों के माइंड में आता है तो उनके माइंड में कोर्ट कचहरी आना शुरू हो जाता है कि कोई कोर्ट या कोई जज साहब बैठे होंगे और कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे. क्या डिफरेंस है और उसके अंदर what exactly are the function or how is it different from traditional court कचहरी to company? So there's a big difference. जब हम LLB वगैरह कर रहे थे, so जो external program जैसे जिसका I'm one of the students. So हमारा ये ख्याल था, so we were brought up on the Netflix series of Suits and all those legal dramas. So we used to think that that's the same way. And जैसे आप enter होते हैं कचहरी में, so you get the first reality check over there that this is not the same thing, right? With the grilling and everything that goes on. बिल्कुल. I believe for any professional, you need to go through those. एक होता है ना सर, आप when you're exercising, so your muscle is basically पहले टूटता है फिर बनता है फिर टूटता है. So that's how happens with any professional from any vertical. So legal एक तो आपका है, that's the court कचहरी वाला aspect is there, but I am primarily an in-house counsel, which a lot of people don't really understand. True. So in-house counsel is basically you are representing your company to the best of your abilities, you're safeguarding the interests. Okay. And there's a lot of things जो आप basically in-house कर रहे होते हैं. So in terms of contract drafting, in terms of intellectual property rights, देखना आपके legal opinions on different laws या कोई इस तरह कोई आपकी concerns हैं उसको देखना. And then जो real estate में, so this is something that has also been which has armed me in my MO is the conveyance aspect, which I never knew it existed, but जब real estate में आए हैं, so conveyance is a very interesting वो, क्योंकि आप if you see real estate में a lot of money is invested whether locally or through foreign investment जो हमारे जो भी भाई हजरात बाहर होते हैं through remittances. And the biggest issue for them is two prone issues होते हैं. One is lack of information, which leads to malpractice. And so conveyance basically helps you out with both these. So we basically help you out with verifying your documentation. We will help you out with the service agreements बनाना, आपका rental agreement बनाना, आपका क्या कहते हैं, आपका sales agreement बनाना. Then to do the transfer from, if you are the seller, I'm the buyer, so from आपको मेरी तरफ वो करना है. And all needs to be done through different authorities in place, क्योंकि आपका एक proper एक law नहीं है in पाकिस्तान, जिसकी वजह से आपको एक issue ये आता है कि different authorities के different bylaws चल रहे होते हैं. बिल्कुल. So those legal professionals then help you with the bylaws. Because for an ordinary citizen, it's not easy to go through the bylaws. And then there are also, to be honest, there are people involved बीच में जो who exploit them. True. And जब आपका एक दफ़ा वो कहते हैं once bitten twice shy वाला आपका हिसाब हो जाता है, so then you just pull back from it. So हमारा वही है. So conveyance works under one of our key agendas, which is invest right. So we are not saying you invest with us, but we are always saying that you invest in the those real estate which have जो हमारा एक internal module है of ODE. So it's ownership, approval, demand, delivery. If any project falls on these four categories, please invest in them. But do your homework. So we help you out with that homework and I think to that's need of the hour. जो That अभी जितनी real estate, especially real estate industry को देखें, इतनी cluttered भी है,
lack of information भी है, and psychologically as a human people start to back off That's from right. the industry as an industry as a whole. So उसके लिए I think it's a wonderful initiative And just to help them bring back to the conversation. that is, and also I would, from this medium, I would also like to tell the audience that if a deal is too good to be true, don't go for it. That's the rule of thumb. So if there is some working behind that deal, and they then give you the full feasibility, and then they give you the full ownership bhi hai, approvals bhi hai, so you'll be surprised to know that there are at least 14 approvals required for any vertical construction. Oh wow. Which might go to 16 as well, but 14 आपका minimum चल रहा होता है. So if any project has those 14, it has ownership in place, proper उसकी demand है उस जगह की. So for example, जैसे एक दफ़ा पेशावर में concept आया, so I'm basically from पेशावर, the concept आया plazas का. बिल्कुल ठीक है. So you have ज़मीन, आपने प्लाजा बनाया, मैंने प्लाजा बनाया, without realizing कि end of the day उसने चलना भी है. Yes. It's not about just selling it to the other person, right? So अगर demand है उस प्लाजे की तो please do go for it. But अगर नहीं है, so पाकिस्तान में अगर आप उस तरह देखो तो आपके brands are not that extensive, right? True. I might be wrong in a figure, but I think somewhere around 500-ish आपके brands हैं, छोटे मोटे सब मिला के. So अब वो कितने मॉलों में जाएंगे, कितने प्लाजेस में वो आपने बनाएंगे, so आपने फिर वो भी देखना है. And then delivery है कि whoever is the developer, if they have a track record of delivering, तो मतलब वो फिर ये वाला प्रोजेक्ट भी करें. अब आप देखोगे there is a कब्रिस्तान है ग्रे स्ट्रक्चर्स का इन डिफरेंट ये क्यों है, मतलब someone who has not very well versed with the industry, ये ऐसा क्यों है और किस तरह से हम इस स्टेज के ऊपर आए? So इसके काफ़ी जो हाथ हो सकते हैं, and I go back to the first 2 point of lack of information and malpractice. So if I come to the malpractice side of it, तो malpractices का जो एक major एक issue ये है कि people they feel that real estate may be a quick money, not realizing the fact that real estate basically develops a country. तो हमारा जो अभी इमारात में भी we have a national development plan of 25 years which अगर आप I worked for other MNOs, so it's on most maximum होता है 5-year plan होता है, then you hit that 5 and then you go to the next 5, right? So we made a plan for 25 years. So we उसमें यही है कि demand and supply के साथ आप काम कर रहे होते हैं. To come to the malpractice side of it, तो people just go into it कि यार ज़मीन है, बना देते हैं, फिर देखी जाएगी, right? और people have this concept के ये उस पर बिक जाएगा, you know, on the down payments, और उस पर construction कर देंगे, but not the case. You need to have some capital in place. जैसे दुबई में there is an escrow का एक मॉडल in place है, so the developer has to put an X amount in the escrow. अगर for example 2 साल बाद whatever reasons की वजह से the developer can't do it, पर लोगों ने invest किया तो escrow का kicks in. So at least जो आपका that's an inbuilt security for the end investor या जो भी आपका end user है उसके लिए. So ये कुछ चीज़ें I think laws needs to be much more effective. थोड़े से क्या कहते हैं पर्टिकुलर होने की ज़रूरत है, और एटलीस्ट कंसिस्टेंट होने की ज़रूरत है. नॉट एवरी अथॉरिटी शुड नॉट हैव डिफरेंट बायलॉज, यू नो, इट हैज़ टू गो थ्रू अ प्रॉपर, एक होता है ना कि इनफ्लो ऑफ वो चल रहा होता है, तो अगर उससे चले so then it won't be a big problem at the end to for the end user. पर अगर हर कोई there's a lacunas in between, loopholes हैं, people will exploit people it. will be exploited. Yes. So I think just from a consumer or end user point of view, आपने बताया कि तकरीबन को 10 से 15 approvals हैं जो कि high rise buildings के होते हैं. Coming thinking straightly from an end user point of view, ऐसे वो क्या points होने चाहिए मेरे mind में, let's say कि if I want to buy a real estate, legal standpoint में मुझे क्या अपने mind में tick boxes रखने चाहिए, and you mentioned about demand, how we can determine कि ये project viable भी हो गया या नहीं, तो उससे अपने आप से गुफ्तगू क्या करें और किस तरह से आप ओड करें जो हम करते हैं ना. सो ओड कैन बी डन फॉर द बिगेस्ट ऑफ फिजिबिलिटीज एंड ओड कैन बी डन फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. आप किसी भी डेवलपर के पास जाएं, आई एम नॉट सेइंग कम टू अस, गो टू एनीबॉडी दैट यू वांट टू गो, आप उनसे सिर्फ 4 सवाल पूछें. आपके ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स हैं तो प्लीज़ शेयर करें. आपके पास सारे अप्रूवल्स इन प्लेस हैं तो प्लीज़ शेयर करें. आपके पास अपना ट्रैक रिकॉर्ड आप हमारे साथ शेयर करें, इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइम डेवलपर और इफ़ यू हैव डन समथिंग इन द पास्ट, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप अपनी फिजिबिलिटी स्टडी हमारे साथ शेयर करें. सो वी बिफोर गोइंग डेवलपिंग एनी प्रोजेक्ट ऑफ आवर ओन, वी डू अ प्रॉपर फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ इट. लाइक फॉर एग्जांपल एक जगह पे
रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की ज़रूरत है, हम वहाँ पे मॉल बना दें, ना मॉल चले ना वो चले, राइट? सो यू नीड टू बी वेरी कि इस एक्स जगह पे क्या डिमांड है और क्या बनना चाहिए. सो फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स में आप क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं? सो वी कवर एवरीथिंग. सो वी कवर कि इसकी हैबिटेशन कितनी है, इसका नेक्स्ट 10 ईयर प्लान कितना है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोग आएंगे. उसके अलावा जो अभी इनकम स्ट्रेटा क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन भी हम उसमें काउंटर फोर करते हैं. एंड यू नो देयर इज लॉट ऑफ अराउंड 50-60 data points that we hit on for a feasibility before we go ahead. Amazing, amazing. So it's building on to the idea कि रियल एस्टेट एज वी स्पीक, आपने ग्रे स्ट्रक्चर्स की बात की, हम ये गोस्ट टाउन्स चाइना में देखे थे, वी हैव आल्सो स्टार्टेड सीइंग इन पाकिस्तान. ऐसा क्यों हो रहा है एंड व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? सो आपको फॉर एनी डेवलपर टू बी या एनीबडी कमिंग टू रियल एस्टेट ना, आपके पास इकोसिस्टम भी होना चाहिए. लाइक one cannot work without the other, right? आप अपने आप को you can't put on those वो क्या कहते हैं वो घोड़े के वो पहन के आप सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं देख सकते. आपको थोड़ा इसको ना पूरे उसमें देखना पड़ता है. If you allow me, तो इमारात में so we have now after 6 to 7 years of extensive hard work we have been able to establish our ecosystem. So our ecosystem consists of Imarat development, which basically does the construction and all wo hai hamara. Then we have our service vertical, which consists of Grana, which is the first online real estate portal. Then agency, which is the biggest real estate network in Pakistan. So we have almost around 60-70 offices. I might be wrong on the figure. Agar marketing wale dekhna to sorry, lekin I think ye figure. And PropSure. So PropSure is जो हमारा R&D wing है, which does the feasibility and everything. Then आपको यह भी देखना होगा कि आपकी hospitality is also now in the booming. So for that we then partnered with Marriott. So we are now their main franchisees in Pakistan, and we are doing Courtyard and 4 hotels हमारे are in progress. 2 we will be delivering this year. And then उसके बाद then you also need to see आपने अपनी जो human resources, पाकिस्तान में the human resources is there. It's talented, but to be honest, for them to go to the next level, they need the training. जो आज भी हमारी सुबह एक लीडरशिप मीटिंग हुई है, तो उसमें भी हमारा चेयरमैन इज वेरी मच फोकस्ड ऑन ट्रेनिंग. तो आपने फॉर यू टू कीप ऑन गोइंग अप द लैडर और गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल, यू नीड टू हैव दैट प्रॉपर ट्रेनिंग इन प्लेस टू पॉलिश योर स्किल्स. So we have then a training institute in place, and then also policies क्या बननी चाहिए. And then national development plan भी हमारा for the next 25 years. So आपको पूरे ecosystem में जब आप काम करते हो, so then आपके जो ghost towns वाली जो एक philosophy है वो ख़त्म हो जाए. क्योंकि अगर एक developer सिर्फ बना रहा है पर वो ये नहीं सोच रहा कि इसमें रहेगा कौन बाद में, या इस X जगह पे इसकी ज़रूरत भी है कि नहीं है, and they just keep on constructing and constructing and constructing. तो अगर आपकी वहाँ पे population ही नहीं बढ़ रही, या अगर फॉर एग्जांपल जो सिटी का ट्रेंड है टुवर्ड्स द नॉर्थ है लेकिन आप साउथ में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सो दीज आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जो आपको देखना पड़ता है बिफोर गोइंग इनटू एनी प्रोजेक्ट. So someone who is managing the legal aspects of a property group and consultant, and someone who is also interacting with end users, बहुत सारा ग्रे एरिया फील होता है. जैसे आपने कहा कि इतनी ज़्यादा अथॉरिटीज़ हैं, इतने ज़्यादा challenges हैं. What have you learned in this process while interacting with the authorities and also while interacting with the end user? क्या pain points हैं, and what can be the potential? So the pain points for any customer, एक तो initially confidence का भी एक होता है ना. I don't mean to say confidence in real estate, but confidence in the project. आप कैसे project कह सकते हो, या थोड़ा सा fear. I think fear is the right word. Fear of कि यार हमारे साथ कोई धोखा ना हो जाए, राइट? कि मतलब ये आई थिंक साइकोलॉजिकली अगर आप देखें कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो साइकोलॉजिकली एज ह्यूमन वी आर ट्रेन कि हम बैक ऑफ करते हैं और डरते हैं उस इन्फॉर्मेशन से. तो एक तो उनका एक फियर है, देन ऑब्वियसली टू गिव देम दैट कॉन्फिडेंस, एंड दैट कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम द ओड जो मैंने अभी आपको बताया. इफ यू हैव एवरीथिंग इन प्लेस, देन ऑब्वियसली आपके कस्टमर इज ऑल्सो और योर क्लाइंट इज मच मोर कंफर्टेबल. फ्रॉम अ रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज अ लॉट ऑफ things that needs to be developed. थोड़ा सा हमें legislation पे भी काम करना है, and I think we are on the right track. इंशाल्लाह within 5 to 10 years ये थोड़ा सा एक होता है ना, एक मार्केट का एक असूल है, वो लोग आते हैं फिल्टर होते हैं और जो the survival of the fittest वाली बात रह जाती है. So the who is working from this aspect कि यार हमने we need to develop Pakistan and from the real estate perspective. So आप इसको आगे लेके चल सकते हैं. आपके real estate के साथ you might be surprised to know that
I think around 30 or 40 industries are involved. Oh, wow. So आपका सीमेंट इंडस्ट्री, आपकी मैन्युफैक्चरिंग, सो आप रियल एस्टेट को ना, और एक जो एक स्टिग्मा भी लग गया ना, और एक कि जी ये रियल एस्टेट वाले हैं. Yes. Excuse me. This is a very strong and big stigma वैसे. Yes, but the thing is, excuse me, it's we all are not. मतलब आप मेरी अब वो देख रहे हैं. I'm not wearing क्या कहते हैं वो कुर्ता वगैरह और वो कल्फ वाले कपड़े पहनेगा ना. मैं अभी प्राडो में आया हूँ ना, हमारा कोई और इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है. So that आप you can see those, there are going to be people and those people are in every industry. I'm not saying कि मतलब कुछ उसमें गलत है, लेकिन at least you need to see that education, people who are educated are also now migrating towards this industry because we see the potential in it. हमारा एक नारा भी है to transform the real estate sector, and that you can do first. आप अपने आप को transform करोगे, then you can do an external transformation, right? तो आहिस्ता आहिस्ता ही आपकी ये डेवलपमेंट हो रही है. एंड आप एक तो स्टिग्मा हटाने की ज़रूरत है. एजुकेटेड पीपल नीड टू माइग्रेट टू दिस मोर, ताकि जो आपके जो साथ के जो लोग हैं हु हैव कंसर्न, जो सैलरीड पीपल हैं हु बड़ी मुश्किल जिन्होंने सेविंग की है एंड देन दे वांट टू इन्वेस्ट बट दे आर स्केयर्ड टू इन्वेस्ट, तो उनको फिर कॉन्फिडेंस ही इस चीज़ से है कि जो मेरे अक्रॉस द टेबल जो बंदा बैठा है, ही नोज हिज गेम and he knows the whole market and he or she will give me the best opinion that there is. बाकी लूँ ना लूँ मेरी मर्जी है, but at least I have that complete information. लेकिन फातिम, अगर आप देखें, दो किस्म के टैलेंट हमें रियल एस्टेट में नज़र आता है. एक है बहुत फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं जो इन्हें इमीडिएटली की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लेकिन वो दे कम इन एज सेल्स स्टाफ और सेल्स एग्जीक्यूटिव और इमीडिएटली स्टार्ट वर्किंग. लेकिन जो नॉलेज बेस और जो अंडरस्टैंडिंग और जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है उसके अंदर कमी है. लेकिन जैसे जैसे आप करियर में प्रोग्रेस करते हैं, आप इस तरह का जो सेल्स आपका इतना बल्क है वो ऐसा ऐसा डाइल्यूट होता रहता है और बहुत शाज़ो नाज़िर और बहुत कम टैलेंट ऊपर तक आता है. ऐसा क्यों है? और इज़ देयर एनी टेक्निकल नॉलेज बेस या कोई ट्रेनिंग हो रिक्वायर्ड? बिकॉज आपने अकाउंटेंट बनना है या आपने अगर मार्केटियर बनना है या डिजिटल मार्केटिंग करनी है, कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है, उसके रिक्वायर्ड कोर्सेज, सर्टिफिकेशन और एक इकोसिस्टम होता है जिसके अंदर आप अपने आप को ट्रेन करते हैं. तो हाउ डू यू सी दैट एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एंड हाउ डू यू सी कि इस नॉलेज गैप और इस गैप को हम कैसे फिल कर सकते हैं? So we are the only real estate company in Pakistan who have collaborated with Nust and Pied, and we are doing a real estate diploma. Oh, okay. Actually, so it's a proper. We are doing a real estate proper. There are lectures. Amazing. There's a certification that we do, and then they come in. So it can be for our existing staff who जो आप कह रहे हो जो आए हैं, and then we can put them back into the burner. Or for anybody else who is a bit confused on which sector to go, so they can do that certification and then they can come up. जो आपकी बात है ना, जो filter out हो रहे होते हैं लोग, so that to be honest, that goes with any sector. So I work for telecom, I work for passive telecommunication, and I've also worked for a microfinance. Okay. वो हर एक में there is this turnover का एक churn आपका रहता है. So it's something to do with the company or the industry, but it also something to do with आपका inner वो क्या है. अब हमारा यहाँ पे जो एक fundamental एक issue पाकिस्तान में है कि we don't have counselors in our high schools or in your whatever, आप जो second आप जो कह सकते हो schools के अंदर. अब काफ़ी सारे, मैं जब when I was growing up the trend was BBA करते हैं. चलो जी BBA करते हैं. अच्छा, वहाँ पे at least I think 60% of my जो बैच था वो BBA करने चले गए. किसी भी उसमें ना बहरिया चले गए, इधर उधर सब में वो चले गए, एयर वगैरह में. और अच्छा BBA कर दिया. अब BBA में कौन सा करें? अच्छा यार ये HR आसान लग रहा है, ये कर देते हैं. कोई ये मार्केटिंग थोड़ा आसान है, फाइनेंस ड्राई है, ये नहीं करते, इसको छोड़ दो ना. तो सो जब अच्छा 4 साल बाद जब वो पूरा लॉट निकला, फिर उन्होंने जब वो बाहर निकले ना, तो फिर एक कंपटीशन बन गया. अब HR के मतलब फॉर एग्जांपल 2000 बंदा HR में जा रहा है, तो 2000 बंदा इधर जा रहा है. एंड देन चलो यार MBA कर देते हैं. अब MBA ना, ताकि थोड़ी फैमिली भी थोड़ा बैकअप हो जाए, बच्चा MBA कर. सो वो बात आती है आपकी इनिशियली काउंसलिंग में, आपका एप्टीट्यूड क्या है. मे बी दैट गाय हु वाज डूइंग अ BBA, उसका वो एप्टीट्यूड नहीं था. मे बी उसका रियल एस्टेट एप्टीट्यूड, मे बी उसका सेल्स एप्टीट्यूड है, मे बी उसका लीगल एप्टीट्यूड, मे बी उसका HR ही एप्टीट्यूड है, लेकिन वो मार्केटिंग कर. सो आपके अगर एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे ऑन द फाउंडेशन लेवल, तो आपका ये जो चर्न एक चल रहा होता है ना, जो बेचारे फिर जब करके मिसडायरेक्टेड
हाँ जैसे बेचारे मिस डायरेक्टेड हो के चलो जी सेल्स में घुस गए, ओ नहीं आई एम नॉट एंजॉइंग दिस, लेट्स नाउ गो टू दिस अदर कंपनी, और हम इसकी एचआर में घुस जाते हैं. बिल्कुल ठीक है. सो यू नो देन यू डोंट गेट क्या कहते हैं हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, वो वाला आपका हिसाब खत्म हो जाता है. So I think this is a larger problem ऐसा फंडामेंटल जिसको पाकिस्तान as का a प्रॉब्लम, society को challenge सोसाइटी करना आपको पड़ेगा. देखना पड़ेगा हाँ. इसको. लेकिन I think these are wonderful initiatives, someone who is trying to fill that knowledge gap. Because मैं जितने भी सेल्स के एग्जेक्टिव्स के साथ ट्रेनिंग्स में इंटरेक्शन होता है, देयर इज दिस नॉलेज गैप जो कि वो मिसडायरेक्टेड फील करते हैं. सो आई थिंक आई एम ग्लैड कि इस तरह के इनिशिएटिव्स ऑलरेडी आर इन प्लेस जिसकी बेसिस के ऊपर वो इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं. एंड अली टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, एक और भी मैंने चीज़ देखी ना, कुछ लोग अगर आप अपनी जो आउटसाइड ऑफिस लाइफ में भी अगर आप बोरिंग हो जाते हैं, सो आपका इट directly impacts your work, because then your personality becomes that, right? So I have tried to थोड़ा सा अपने आप को I had gone into that phase, now I'm trying to get out. So we have started off like you, I would always advise anybody to do something an hour for yourself. Yes. अगर आप पूरे दिन में नहीं कर सकते, do it in a week. But at least that जो एक होता है रीस्टार्ट बटन या रिफ्रेश बटन आपका हो जाए. So like I have started off playing football. It was a big passion of mine in school, then left it because of work and ye wo. So started off with that. So we play like every week, once a week. And I would advise people to do these kind of activities क्योंकि वो ही आपको refresh करते हैं. Then that helps you with your work as well. जैसे कहते हैं annuals आप दिया करें, because that refreshes you when you come back to work. So मतलब काम is very important. बट आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर किलिंग आप ना बैठे, एटलीस्ट आपकी प्रोडक्टिविटी भी उसमें होनी चाहिए. तो दीज आर थिंग्स दैट आई थिंक पीपल शुड डू. एटलीस्ट जो अब मेरी तरह के जो कहते हैं कॉर्पोरेट जो में जो काम कर रहे हैं, जिनको 12-15 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, सो यू नीड टू एंड वी नीड टू ऑल्सो डू अनदर थिंग जो एक है अनलर्न रीलर्न, सॉरी मैं तीसरा पता नहीं क्या इसका, learn, unlearn, relearn. So we need to keep on doing that on an annual or a quarterly basis for us to also grow as क्योंकि हो जाता है कि आप अपने इतने ways में stuck हो जाते हैं that you don't, आप अपने silos में ही stuck रहते हैं. आप और आप जो है innovations, basic innovative ideas आप जो है ना उसको आपका first interest नहीं गलत है, ये नहीं कर सकते. True. And maybe those are right. Maybe आपका जो सबसे junior most colleague है, he or she comes up with the best idea जो कि आप you might be racking your brains with it for the longest time. नहीं, I think just the idea कि अपने आप को ब्रेक देना, ट्रैवल करना या टाइम ऑफ लेना, अक्सर डिस्कशन और ट्रेनिंग्स में बात हो रही होती कि सर हमारे पास कुछ स्टोरीज़ नहीं है, या कॉन्वर्सेशन में हम वो मिठास और डेप्थ और वो कैसे लेके आएँ. एक आइडिया ये है कि आप जितने न्यू एक्सपीरियंसेस, जस्ट टू योर पॉइंट, कि अपने आप को देंगे, कोई नई एक्टिविटी ट्राई करें, हॉर्स राइडिंग करें, गन चलाना सीखें, घोड़ा, जो भी आप कर सकते हैं, अपने आप को एंगेज करें न्यू एक्टिविटीज़ में. दैट वे यू विल हैव मोर स्टोरीज टू टेल. सो दैट्स राइट. सो जैसे आई सर्कल बैक टू द फुटबॉल वाला वो, so there are some friends जो मेरे पुराने थे, we reconnected, let's put it that way, because through football we have again reconnected in the sense कि we used to talk but not, अब हमारे एक है week में we do meet and then so, but then I met some new really great people as well through it. मतलब आपके दोस्त आगे साथ, friends of friends से आप जब connect करते हो, so then you learn from there, some stories वगैरह आती हैं, and also then you learn teamwork और इस तरह की चीज़ें वगैरह. So you need to do these new activities. अच्छा, मैंने काफ़ी लोगों को देखा एनुअल देके जी क्या करें जी, हम घर बैठे हैं. तो आप फिर एनुअल क्यों दे रहे हैं, फिर आप काम ही कर रहे हैं. There is like no point of you taking those annuals when you have to stay home. और आपकी पर्सनैलिटी इतनी ड्राई अब होना शुरू होगी है. सो जी हम नींदें पूरे कर रहे हैं. I don't get that concept to be honest. So I think whatever you feed to your mind and body वो translate. That's true. So if you want to be a good story, if you want your personality to be interesting, it is imperative कि आप नए एक्सपीरियंसेस लें, ट्रैवल करें, नए लोगों से मिले, कल्चर्स को सीखें. दैट पे आपकी शख्सियत के अंदर भी वो निखार आना शुरू हो जाएगा. जब नए लोगों से भी मिलते हैं तो एक्सपीरियंसेस जब आपके इन्हांस हो रहे होते हैं, दैट आई हैव सीन डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स इन योर वर्क. एग्जैक्टली. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत पावरफुल कोरिलेशन है. या देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स. जैसे अगर लोग मुझे ये कहेंगे कि आप तो लीगल के हैं, तो आपका लोगों से जब मिलते हैं तो आपका क्या होता है, दैट हेल्प्स मी विद माय नेगोशिएशन स्किल्स. You know, so that helps me with my
interpersonal skills that helps me with my stakeholder management. True. So these are things that you need to be and ये नहीं होता कि मैं बहुत ही conscious mind से एक बंदे से मिल रहा हूँ कि मैं अब इसे सीखूंगा, but that's something that keeps on your mind is basically वो feed हो रहा होता है उसके अंदर. True. I think that's a beautiful point to understand. And Fatim, आपके जो आप कह लेंगे जो बच्चे भी लीगल फर्टर्निटी में आने की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे assumptions और aspirations लेके आप भी जब इंडस्ट्री में आए होंगे, but you have come a long way, माशाल्लाह, and you've seen the industry grow and thrive, और आपको काफ़ी अरसा हो भी गया. Someone who is still in the legal fraternity में आने लगे हैं, अभी अपनी बैचलर्स डिग्रीज में LLB कर रहे हैं, LLM कर रहे हैं, क्या चेंज है, क्या एडवाइस करेंगे उन्हें, व्हाट वर देयर एस्पिरेशन, और अब रियलिटी के अंदर क्या है? So legal जो लीगल आपका पूरा जो करियर पाथ है इट्स क्वाइट टफ, and there is no sugar coated way to put it. There is a lot of long hours, there's a lot of hardships, there's a lot of bullying. Bullying is the wrong word, but there's a lot of things that you need to learn from your so there's a lot of learning उसमें. Then there's a lot of things जो आपकी personality में भी ना हो. So जो bullying वाला है तो that was the wrong word to use, but actually जो आपकी personality में ना हो, but then you need to adapt. Okay. And then there's there are cultural shocks जो there are आपको big culture shocks, and then there's also you need to so you एकदम से you start deep जो deep end of the pool में आपको फेंक दिया जाता है, right? So this is the primary वो जो चल रहा है. Okay. दूसरी एक और चीज़ जो आपको एक और सीखने की भी ज़रूरत है ना, so and I tell this to a lot of people. So my first first जो आप कह सकते हो लॉ फर्म एक्सपीरियंस जो था उसमें आई वाज जस्ट अपने कानों में हेडफोन्स लगा के, ठीक है, एक जैसे अभी हम बात करें वो ट्रांसक्रिप्ट चल रहा है और मैं उसको टाइप कर रहा हूँ, अली ने ये कहा, फातिम ने ये कहा, अली ने ये कहा, फातिम ने ये कहा, ठीक है, and I circle these things just if you give me a few minutes. My other law firm में जो था उसमें ये था कि you need to be the first person in and the last person out. So that used to have hours like सुबह के 8 बजे से रात के 9-10 बजे तक. अच्छा, जब मैं जैज़ में गया so I was basically hired क्योंकि हमारे तो जैज़ में भी ये था कि एग्रीमेंट्स वगैरह जो होते थे so different departments के पड़े होते थे. So they were all basically reconciled and they एक proper एक fireproof एक vault सा बना actually, और उस vault में वो रखे गए. And then my job was to do 9,000 agreements की scanning, uploading, cataloging, filing, and उसकी भी वो सारा कुछ. So if you think एकदम से आसान था, it was not easy, right? So 3 महीने मैंने ये 9,000 किए. अब मैं आपको बता दूं ये 3 इंसिडेंट्स को मैं अभी इंटरलिंक करता हूँ विद माय नाउ. सो द फर्स्ट वाज रिगार्डिंग ट्रांसक्रिप्ट. सो दोस ट्रांसक्रिप्ट की जो एक ट्रेनिंग सी हुई, सो दैट हेल्प मी नाउ विद मिनट्स ड्राफ्टिंग. जो बोर्ड मिनट्स हो रहे होते हैं ना उसकी ड्राफ्टिंग में, सो इट हेल्प्स मी कितना सुनना है क्या वो सारा कुछ, राइट? बिल्कुल ठीक है. The second was about long hours, so I still exercise those long hours now. So I'm usually the first one in, despite the fact that I'm leading a team. So first one, or I try not to be late. Let's put it that way. And I'm usually the last one out. Despite that, आज मैं podcast में जल्दी निकलूँ तो वो मेरे वो कह रहे. But I've seen the action जो show से पहले हो रहा था. तो I'll be going back to office again after. And the third was regarding the record जो cataloging वगैरह. So now in my current जो role है उसमें one of the verticals I have is of record keeping. So I have done those whole cataloging before. So it's easier for me to जो मेरे सामने जो sheet आती है ना तो मैं उसको एकदम से pick कर सकता हूँ. So my mentor used to always say, so I've had few mentors in my career as well, and they've all taught me different things. So जैसे एक मेरे mentor थे उज़ैर साहब, so he's taught me the work ethics. Then मेरी एक और mentor थी मैम सरवत, तो she's taught me interpersonal skills and how to manage a team. And then मेरे एक और थे मनान साहब who has basically taught me to be a bit fearless. हर वक्त आप डर डर के मत चलें. So they उन तीनों का एक ही concept था, वो ये था कि अगर आप नीचे से मार खाते हुए ऊपर आओगे तो फिर आपको जो है ना नीचे वाले जो जब आप एक लेवल तक आओगे then you can easily manage your teams क्योंकि आपने वो काम किया होता है.
सो एक तो आप उनको भी एक आइडिया दे सकते अगर वो कहीं पे स्टक हो रहे हैं, दूसरा ये अगर आपके साथ कुछ वो कर रहे होते हैं तो आपको भी पता होता है, आप भी आइडेंटिफाई क्योंकि आप भी वो कर चुके होते हैं पहले. सो द थिंग, अगर मैं आप सॉरी तो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इफ आई कम बैक टू वो कि यू नीड टू बी, आपके वर्क एथिक्स ठीक होने चाहिए, यू नीड टू बी रेडी फॉर हार्डशिप्स, यू नीड टू बी रेडी फॉर कल्चर शॉक, एंड इफ यू पुट इन द टाइम देन आप टाइम इस वक्त आप आउट कर सकते हैं. बिल्कुल. If you don't put in time in during your initial years, तो then फिर आप नहीं करें. And fifth year थोड़ा सा जो एक जनरल भी मैं, क्योंकि मैं देखता हूँ जो अभी लोग जो इंटरव्यू करने आ रहे होते हैं या जो थोड़े से जो अभी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, दे वांट इंस्टेंट सक्सेस. इंस्टेंट नहीं मिलेगा आपको. अगर आप इफ यू डोंट पुट इन द आवर्स नाउ, यू कैन फॉरगेट गेटिंग एनी सक्सेस, क्योंकि आप फिर बेसिकली ना यू जस्ट कीप ऑन एक कंपनी से दूसरी कंपनी जॉब हॉप कर रहे हैं या करियर हॉप कर रहे हैं, एंड आफ्टर 10-12 years you realize कि यार आई एम nowhere. So put in the hours now. थोड़ा कुछ मुश्किल भी होंगे, और जो डिफिकल्ट बॉसेस होते हैं, जो मैंने काफ़ी लोगों को देखा है ना, वो मैं देखता रहता हूँ कोर्ट्स, पीपल डोंट लीव द ऑर्गेनाइजेशन, पीपल लीव द बॉसेस. आई गेट दैट पॉइंट. पर वो जो बैड बॉस आपको सिखाता है ना, एक तो वो आपको ये सिखाता है कि क्या नहीं करना. सो व्हेन यू गेट टू दैट पोजीशन, एंड थर्ड वो दूसरा ये आपकी रेजिलियंस भी वो बिल्डअप करो, कैपेसिटी बिल्डिंग करो. सो थोड़ा सा टफ टाइम दें. आई थिंक दिस इज अ ब्यूटिफुल स्टेप. अगर हम एक चार्ट बनाने की कोशिश करें तो ये बहुत अच्छा प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है यंग ग्रेजुएट्स के लिए. कि and key takeaways, don't shy away from hard work. Yeah. And that is, you could say that the prereq to for anyone to understand and go through. So let's say someone who has done their LLB, अब वो find out करने की कोशिश कर रहे हैं, and we'll stick to the corporate legal और जिस तरह जो services provide करते हैं lawyer. उसके लिए what are the few initial steps जो कि एक recent और young graduate ले सकता है, so that they can carve out their journey और एक बेहतर position के ऊपर पहुंच सके. एक तो first thing first कि आप LLB के फौरन बाद अपना LLM ना करें. That's my personal view. The reason being क्योंकि लोग LLM कर देते हैं. So for example आपने LLM कंपनी जॉब में किया है, but आपका aptitude towards litigation है. So आपने basically वो डिग्री ज़ाया की है अपनी, right? So give yourself a couple of years. Okay. Whether you want to go into the courts, कचहरी वगैरह आप करना चाहते हैं, go for it. Okay. If that rocks your boat, why not? And उसी में फिर आप बाहर की तरफ चले जाना. So that helps you. जो आप एक aptitude है तो your basic degree is complementing that, right? अगर वो आपका नहीं है, go for in-house. In-house में आप आए, in-house में भी there. तो लोगों का ये है ना कि in-house बड़ा ही आसान है. That's not the case. So just for everyone's वैसे नॉलेज, तो मोटे मोटे अगर आप वर्टिकल्स देखें तो एक कॉन्ट्रैक्ट्स है, बिल्कुल, एक आपका लिटिगेशन. आपने इन हाउस भी लिटिगेशन करनी होती है. मतलब ये आई एम ग्लैड आपने बता दिया, बिकॉज आई थिंक इसके बारे में भी बहुत कम इन्फॉर्मेशन है. अक्सर लोगों को जब भी कोर्ट लॉ की बात आती है तो कोर्ट कचहरी इमीडिएटली आते हैं. दिस इन हाउस काउंसिल्स, ये मे बी हमने बाहर के सीजन्स में ही देखा है, लेकिन बहुत कम इसके बारे में इन्फॉर्मेशन. सो बेसिकली आपके पास ना इसके जो 5-6 वर्टिकल्स हैं, सो आई सेइंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपका. सो वेदर इट्स वेंडर्स के साथ whatever, जो भी whatever comes under the contracts ambit, right? Then आपका एक litigation में होता है केस मैनेजमेंट. सो ऑब्वियसली अगर आपके 200-300 केस चल रहे हो या 100 केस या 20 केस, I don't want to क्या कहते हैं अपना हॉर्न वो नहीं करना चाह रहा, but we are basically zero litigation in Emarat. Amazing. And that's a big accomplishment. That's a big achievement, especially the kind of industry you're operating in. खैर, so litigation में there's a lot of case management. So आपका obviously आप 100-200 cases आप नहीं कर सकते, मतलब appear नहीं हो सकते. So you have external counsel for that, but उस एक तो वो केस की मैनेजमेंट करना. So you need to have proper dashboard in there कि फलाने तारीख को फलानी चीज़ आनी है, and you need to have gone through a circle of a case. तो आपको पता होना चाहिए कि वकालतनामा कब जाएगा, पावर ऑफ अटर्नी कब जाएगी, इस केस में पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, आपने अपना वो रिस्पॉन्स कब देना है, एविडेंस कब होगी. सो वो अगर आप लेके चलोगे तो जो एक्सटर्नल काउंसल वो भी आपको, जो मैं पहली बार करता ना, अगर आपने नीचे से मार खाई होगी तो आप ऊपर जाके सर्वाइव करेंगे. तो अगर आपने लिटिगेशन में मार खाई हुई है, तो आप अगर लिटिगेशन इन हाउस में है तो देन अगर आपके साथ थोड़ा वो कुछ कर रहा है तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट. प्लस इवन यू कैन आल्सो हेल्प हिम टू गो फॉर अनदर स्ट्रेटजी, क्योंकि वो भी कभी कभार होता है ना, आप इतना एक टनल विजन से आप सोचो. सो देयर इज अ लॉट ऑफ केस मैनेजमेंट. देन देयर इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो आपके ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स वगैरह ये सब कुछ है. देन उसके बाद यू हैव योर कॉर्पोरेट साइड, जिसमें आपकी
लीगल ओपिनियंस, लीगल ड्राफ्टिंग, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, Okay. इस तरह की सारी चीज़ें आपकी आती हैं. देन देयर इज द कंपनी सेक्रेटेरिएट है, तो कुछ कंपनीज में लीगल में होता है, कुछ कंपनी में फाइनेंस में होता है. सो इफ़ वी पार्क इट हेयर, तो आपका SECP की रेगुलेशन, बोर्ड मीटिंग, शेयर होल्डर मीटिंग, ये सब They also keep you very busy with the या regulation, taxes और वो तो वो सारे उसमें. टैक्सेशन ओपिनियंस, रेगुलेटरी के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस. सो ये बेसिकली आपका, अगर आप मोटा मोटा आप देखें ना, तो दीज आर 6 to 8 वर्टिकल्स इन एन इन हाउस. सो आपके पास जो बात है ना, अगर आप निकलते हो, सो इफ़ यू गो इनटू इन हाउस, तो आपके पास 7 to 8 ऑप्शंस हैं. यू सी वेयर योर माइंड इज वर्किंग, एंड देन आप फिर उसी में आप अपना LLM कर सकते हो आफ्टर फ्यू ईयर्स. आई थिंक दीज आर वेरी, वो ऐसी प्रैक्टिकल इंसाइट और नॉलेज है जो कि आपको किसी आर्टिकल या वेबसाइट के ऊपर इस तरह क्लियरली मेंशन नहीं मिलेंगे. थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग, ताकि जो पोटेंशियल बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने इस फील्ड में आना है, उनको हेल्प मिल सके डिसाइड करने के लिए. कोई एप्टीट्यूड या मिजाज को डिटरमिन सॉरी आपको मैं कट कर रहा हूँ. मैंने ज़्यादातर देखा है, जो लोग जो मेंटर दे रहे होते हैं ना, वो बेचारों को खुद मेंटरशिप की ज़रूरत होती है. तो वो बेचारों ने कभी खुद कोर्ट्स में या कॉर्पोरेट में काम नहीं किया होता है, और वो मशवरे दे रहे होते हैं. एग्जैक्टली. और आई थिंक दैट्स व्हाई इट इज़ नेसेसरी कि आपने बहुत क्लियर टर्म्स में बता दी कि दिस इज द थिंग और ये काम करना है, जिस वजह से आप कर सकते हैं. सो डिफरेंट कंपनीज हैव डिफरेंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल्स होते हैं ना. कोई क्या यूज़ करते हैं, कोई कुछ यूज़ करते हैं. सो वी यूज़ 2P इमारात में ना. अब हमने एक और P इसमें ऐड किया. सो इट्स प्लानिंग, पीपल, पर्सनैलिटी. सॉरी, प्लानिंग, परफॉर्मेंस, personality. Okay, planning, performance and personality. Yeah, so if you have the right personality, even if you have the lack of knowledge, it's my job to groom you and bring you up. But at least आपके you fundamentally, your mind and your ethics needs to be right in terms of work ethics. You put in the hours, you सारा कुछ आप कर रहे हैं, and there is a learning curve जो आपका आ रहा है उसके अंदर. तो these are things that you need to develop. अगर so we don't expect a new graduate to know everything जब वो initially आ रहा है. And it's our responsibility to train them. But I can go to a 20%. क्योंकि मेरे पास और भी काम है. Let's be honest. The organization is not an institution which will teach you, right? But the 80% effort आपने करनी है. अगर आप उस 80 में 60 भी कर रहे हैं, so that's a good वो. लेकिन I अगर think that's traditional 80-20% rule जो कि economics में भी use होता है and societal decision. That's a good framework to go about. लेकिन अगर आप उधर नहीं आ रहे, if you're not putting in your share, then you need to put more share in. So then even I lose interest. I then put my energy to some other person who is putting the जैसे मैंने अपने टीम के अंदर, so it's a very clear personality model है. So everybody is mapped. From the junior most colleague to the senior most, everybody has their own personality का वो marking हुई हुई है. Subjectively obviously, and then we have given them each percentage. Okay. So for example, if you are managing a team under you of 2 people, और आपने उनको example दे रहा हूँ, आपने एक को 70 दिया, एक को आपने 75 दिया. So every month I'll question you whether that 70 is stagnant, or that 70 has gone up, or that 70 has gone down. If it has gone down, you need to tell me why it's gone down. If it has gone up, you need to also explain to me why it has gone up. What has drastically changed for that 70 to become a 75? और अगर स्टैगनेंट है, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आप क्या कर रहे हैं. True. आपका काम सिर्फ एक बॉस की तरह बैठना नहीं है. आपका काम है इनको ग्रूम करके इनको ऊपर लेकर आना. Well, then we are basically building a new crop of professionals who are coming in, who will then eventually replace us. Proper succession planning, और I think That's right. big companies में ये succession planning is absolutely crucial for a company to thrive. That's true. क्योंकि आप अगर आपको नीचे से कोई चैलेंज नहीं कर रहा ना, तो आप अपनी गेम अप नहीं कर रहे, राइट? अगर मैं इधर हूँ और मेरा जो सबसे क्लोजेस्ट इज हियर इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी, अगर वो मुझे चैलेंज नहीं कर रहा, मैं भी रिलैक्स हो गया. True. लेकिन अगर वो मेरे साथ इधर भी कुछ जुड़ा हुआ है, so then I need to keep my game up. Keep yourself informed, keep yourself motivated, yeah. और अगर मैं वो नहीं करता, तो then obviously then and he or she has that right to then overtake me. So अक्सर फातिम, इस इतनी competitive environment के अंदर there is this idea and you often feel misdirected, misinformed, even demotivated भी होते हैं, because the kind of environment in which we're living economically and culturally भी. Role of mentors इसके अंदर क्या है, और मेंटोर का होना कितना ज़रूरी है, एंड इफ़ यू हैव, आपने मेंशन भी किया आपके मेंटर्स और हाउ दे हैव हेल्प्ड यू इन स्टीयरिंग योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ. मेंटर्स का होना ज़रूरी है, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज
डिस्पाइट द फैक्ट कि मुझे 12-15 साल हो चुके हैं इन द इंडस्ट्री और इन वाइल वर्किंग, बट स्टिल अगर मैंने मेजर करियर चॉइसेस और something that I'm stuck with somewhere, so I always go back to my mentor. I might do what मुझे ठीक लग रहा है, but at least for a perspective I go to them. वही मैंने स्टार्ट बाकी वो मेंटर चूज करें जिन्होंने बेसिकली धक्के खाए हैं. आप वो मेंटर्स ना चूज करें जो खुद भी नहीं धक्के खाए और आपको भी नहीं खाने दे रहे ना. और दूसरा एक और चीज़ है ना कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ना लोग एक विक्टिम सिंड्रोम में भी होते हैं. मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं ही क्यों. आप एक्सक्यूज मी, आप अकेले नहीं हैं. आपकी तरह के हज़ारों लाखों लोग हैं जो बेचारे हर दिन किसी ना किसी जगह पे डिफरेंट इंडस्ट्रीज में वो कर रहे हैं. सो एक तो मेंटरशिप पे करें, बट देन मेंटर गिव्स यू द पर्सपेक्टिव, बट आपने थोड़ा अपना भी माइंड लगाना होता है, राइट. सो इनिशियल आपके जो इनिशियल ईयर्स में होता है, मेंटर बेसिकली इंसर्ट्स आपके अंदर वर्क एथिक्स और जिस तरह की चीज़ें आपके अंदर वो प्लग इन करते हैं. बट जब आप थोड़ा सा ऊपर आ रहे होते हैं, देन यू आपकी एक रिलायबिलिटी को आपने थोड़ा बहुत कम तो नहीं, लेकिन आपने ज़रा अपने आप को भी ऊपर जाना होता है. सो देन एटलीस्ट जब आप अपने मेंटर के साथ डिस्कस कर रहे हो तो वो उनको भी पता है कि यार दी थोड़े एजुकेटेड अब डिस्कशन हो रही है रादर देन द अदर वे अराउंड. So mentors are important. They give you a good perspective, but you also need to choose the right mentors who you know are your well-wishers and who you know will give you the right advice at the right time, actually. Or I think especially someone who are just starting in their career, finding mentors is absolutely critical. Just to help that but to be honest, mentor भी इतनी जल्दी mentees नहीं बनाते ना. आप थोड़ा कुछ उनको दिखाएंगे तो फिर आपकी वो वही आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी हैं, आपका वर्क एथिक कैसा है, देन पीपल विल टेक यू इनटू देयर विंग. लेकिन अगर आप इधर उधर हैं अभी इस वक्त अनश्योर हैं वेदर यू वांट टू बी इन द लीगल, मैं लीगल की ही बात कर सकता हूँ. इफ यू वांट टू, आप अनश्योर हैं, सो देन इट वो भी फिर क्यों आपके साथ एफर्ट करेंगे अ मेंटर. And do you like to read or watch movies or? So I'd be lying if I say I am reading. मैं नहीं कर रहा because then my wife will give me a lot of slack for it at home. So I've stopped reading, to be honest. Time नहीं मिलता. Seasons भी ऐसा है कि I love to do it, but I think my battery goes out at around 11 बजे, so during watching मैं सो जाता हूँ. So बाकी यही है, spending time with the family, with friends. Football is now a very major part of my. और आपने बताया कि आज भी आपका फुटबॉल मैच है. Yes, so we are playing tonight. आज रात 9 बजे हम खेल रहे हैं. Amazing. So and coincidentally, so we started off this exercise. अभी हम परसों ही बात कर रहे थे. So we started off this in Ramzan last year. So it's been a year for us. And हमने जब इनिशियली शुरू किया हम 6 बंदे थे. अच्छा. Now हम माशाल्लाह अराउंड 20-22 बंदा होते हैं. So it's been a good, वो भी it's been a good पूरा वो ग्रुप मैनेज करना, लोगों को जोड़ना. So it's been also been a good. I think this teaches you so much and this bring flavor in your personality. आप लोगों से मिलते हैं, the conversation जो हमने earlier की. वादिम, इतनी insight और इतनी conversation के बाद I'm sure people would love to stay in contact with you. Sure. And if there are any handles, social media platforms, अगर आपसे contact करना चाहें तो please tell the audience कहाँ पे आपको वो ढूंढ सकते हैं. So people can get in touch with me on मेरा Instagram पे मेरा अपना ही नाम पे है, और अगर आपने professional करना है तो please do it on LinkedIn. Okay. मेरे ही नाम से है Fatim Arbab. You can also spell it for some yeah. So it's FATIM and then space ARBAB and Baki, if you want to get in touch with me through email, so I can also share that. We can. Yes, please do. So it's fatim.arbab@emarat.com.pk. So anything you want to share, I'll be more than happy to help. Fatim, thank you so much. You. और I think इस conversation से audience ने तो साथ ही I've also learned so much about the legal contract drafting, और वो मेरे लिए भी बहुत insightful my pleasure, and thank you for having me. It was a pleasure. And I'm glad we could get this done. Yes. Let's meet up again Inshallah, and do it. Inshallah. And thank you so much for taking out the time. I know कि आपका schedule कितना है, मैंने आपको show से पहले भी देखा है जो आपका phone था, और बाद में भी मुझे अंदाजा हो रहा है कि अब वो जो 1 घंटे के messages वो इकट्ठे हो चुके होंगे. वही काफी देर से मैं वो कर रहा हूँ. अर्ज भी हो रही है. So कहते हैं ना phone detox वो नहीं हो रहा है. It's become an addiction now, to be honest. Yes. Or I think the kind of work we live in and the kind of world we live in,
ये बाय डिजाइन अब हो चुका है स्पेशली पोस्ट कोविड और ड्यूरिंग कोविड भी ना, तो आपका सारा कुछ तो यू वेंट ऑन डिजिटल, सो from emails to documents to conversation to video calls, everything is in the so a phone. lot of things I do through my mobile. So because we went to Giga for some eat shopping वगैरह, and so the wife took my daughter for the वो क्या होता है वो train वगैरह के लिए, and I was एक email आई and I was typing that. So वो so you know आपका off hour नहीं चल रहा होता, you are constantly because of your phone you are Are on there it. any apps जो आपको help करती है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आप लोगों को बताना चाहिए जिससे वो So WhatsApp ने शुरू किया था हेल्प, बट अब इतने ग्रुप्स बन गए हैं कि वो मैं थोड़ा सा से अब उससे भी बैक थोड़ा सा मैं वो तो emails, to be honest, email helps me That's the the biggest most. tool. I use that the most. मैं थोड़ा सा मैं ओल्ड स्कूल हूँ, तो मैं ये गूगल शीटें वीटें मुझे नहीं आती, जो मेरी टीम मुझे कहती है सर ये सीखें और ये आप हम करेंगे तो आपका भी अपडेट हो जाए, तो मुझे वो नहीं आता, तो मैं वही MS ऑफिस पे ही चल रहा होता हूँ. फ़ोन पे WhatsApp ये ज़्यादातर जो मैं यूज़ करता हूँ, और या LinkedIn to get in touch with I think these are the tools to contact, and thank you Fatim again for coming and taking out the time. It has been absolute pleasure. My pleasure. And we wish you all the best for your future endeavors and the company and the initiatives which you're taking. Thank you. That was it for today's episode at Leaders Lounge. अगले हफ्ते फिर आप